हेलो, हाय, नमस्ते। मेरा नाम है रश्मि शर्मा। मैं हूँ हेड ऑफ कंटेंट सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी और स्वागत करती हूँ आपका एपिसोड 2 ऑफ वार्तालाप, अ स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज ब्रॉट यू बाय सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी। ये एक ऐसा पॉडकास्ट सीरीज है जहाँ पर हम आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। स्पेशल गेस्ट के रूप में हम हमेशा इन्वाइट करते हैं एजुकेटर्स को, फैकल्टी मेंबर्स को सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी के, ताकि आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को क्रिस्प आंसर्स जो है वो मिल सके। आज के एपिसोड का जो थीम है वो है लिबरल स्टडीज़ के ऊपर, एंड इस स्पेशल पॉडकास्ट के लिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर प्रोफेसर गोपालन को, जिनको पॉपुलरली समीर गोपालन सर के नाम से भी जाना जाता है। सर, वेलकम टू दिस स्पेशल पॉडकास्ट। नमस्ते। बिफोर वी बिगिन, हम बात करना चाहते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज लिबरल स्टडीज। मैम, टू अंडरस्टैंड लिबरल स्टडीज, first of all, people think it is liberal, easy. It's not like that, but it is a multidisciplinary aspect which draws subjects from various disciplines. It draws subjects from humanities, sciences, management, to some extent from the liberal arts also, wherein subjects like drama, dance. So it's a combination of more than one disciplines merging together, and wherein students can excel in the subjects they like. अगर हम बात करें कि लिबरल स्टडीज़ में किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो कौन कौन सी ऐसी नेचुरल क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक बच्चे में, या पेरेंट अपने बच्चे में अगर वो क्वालिटीज़ देखें तो उनको डेफिनेटली सजेस्ट करना चाहिए लिबरल स्टडीज़ एज अ हायर एजुकेशन मीडियम? Look, liberal studies is option for pursuing a career in management or humanities discipline basically. So when you talk of eligibility criteria, any 10+2 graduate is eligible to do this. But जिन बच्चों में creativity, critical thinking, then acumen for business, reasoning abilities ये होती है, then the student should go for this liberal studies program, wherein he can graduate under any discipline, either be it a BA honors or a BBA or a Bachelor of Management Studies or a Bachelor of Commerce. Okay. So at Silver Oak College of Liberal Studies we are having 4 different disciplines that wherein we will be offering this graduation programs. अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया 10+2 के लिए, सो 10+2 में कौन कौन से बच्चों के पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए सो दैट दे आर एलिजिबल टू एटलीस्ट अप्लाई? Any 10+2, he can be a science student also, he can be a commerce student also, he can be a art student also. अगर किसी बच्चे ने 10th standard एक बार डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है, now he wants to come towards a normal graduation discipline, he is also eligible. करेक्ट। सो अगर हम बात करें कि 10+2 के बाद अगर किसी को लिबरल स्टडीज़ में इंटरेस्ट है तो फिर वो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस को टारगेट करेंगे, वो बच्चे, वो पेरेंट्स। पर कौन कौन से ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो बच्चों को देने पड़ते हैं, मे बी इन द स्टेट ऑफ गुजरात, इन द कंट्री इंडिया, या अगर कोई फॉरेन नेशनल्स भी इंडिया में आके पढ़ाई करना चाहे लिबरल स्टडीज़ की, तो क्या है? देखो, एक तो है देयर इज द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET, जो सेंट्रल एग्जाम्स सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, conducted by NTA. So on that score he can apply for the central universities. Other universities, they have got their own mechanism for getting admissions, either maybe through interview, either their own entrance examination. So it varies from university to university and state to state as per the policies of the state government. But yes, CUET score is accepted globally. ओके। अगर हम बात करें ड्यूरेशन, तो जैसे आपने बताया कि 10th के बाद तो नहीं कर सकते हैं, आपको ऑफ कोर्स 12th जो है वो पास करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लिबरल स्टडीज़ की बात करें, अभी मैं सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी की बात नहीं भी करूं, तो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स क्या रहता है फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस? ट्रेडिशनली अच्छा लिबरल स्टडीज़ का प्रोग्राम जो इट विल बी अंडर ऑनर्स कैटेगरी फॉर 4 years एज पर द NEP. So duration will be of 4 years. Under the degree will be awarded as BA honors or BCom honors or BMS honors. Liberal studies, as the name suggests, you will be studying subjects from across multiple domains or multiple disciplines. करेक्ट। अगर मैं इसके स्पेशलाइजेशंस की बात करूं, तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर्स की अगर मैं बात करूं, या मे बी चलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर की बात करूं, तो किस तरीके का करिकुलम रहता है?
So liberal studies is an option wherein the first 4 semesters student gets knowledge across multiple domains Okay. or multiple disciplines, right from humanities, that is psychology, your mass communication, English, management, basic economics, then basic accounting. So basic platform is built up till semester 1, 2, 3, 4. Now he develops an area. Yes, I am good at psychology. I can be good at counseling. So let me take psychology as a major and let me take minor as an English, or let me take management subject as a minor. I want to become an HR manager, so let me take HR as a major and psychology as a minor, so that I can understand employees' psychology well. So this is the beauty of liberal studies. So you can excel with one as a major subject, another as a minor subject. नाइस एंड अगर मैं समझने की कोशिश करूँ मेजर एंड माइनर, तो हाउ आर दे रेंजिंग, मतलब कि कितने नंबर ऑफ मेजर्स में से स्टूडेंट्स कैन सिलेक्ट एंड कितने माइनर्स में से स्टूडेंट कैन सिलेक्ट? At our university, we are having under the Bachelor of Arts umbrella, we are having 6 different specializations, that is English, then economics, psychology, then digital humanities, then environmental studies, international relations. Wow. And under the management discipline we have finance, marketing, HR. Under the business administration we have got logistics program also being offered, and under the commerce discipline we offer international finance and accounts. Wow. So Very it's a wide basket. We have got public administration also being taught under the BA honors. So he can take up international relations and public administration if he's aiming for UPSC or civil service exams. Nice, very So nice. this is the beauty of liberal studies with a wide basket of subjects. नाइस. इफ़ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड लिबरल स्टडीज़, मैं समझना चाहती हूँ कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इंटर्नशिप्स आर मैंडेटरी. व्हेन वी टॉक अबाउट लिबरल स्टडीज़, इन 4 साल के दरमियान कोई इंटर्नशिप होती है तो पेड है, अनपेड है? Look, internships will be an integral part of any programs. You cannot say that internships are only in technical education or let us say medical education where it's mandatory. Here also we have got internships in the form of rural immersions. Our students go for village integrated programs. They go for internships at NGOs, in banks, in organizations like media houses, where if someone wants to become a journalist, okay, or a news anchor, probably they go to these places as interns. So today there is a concept of on YouTube you can do anchoring, you can have your own channel and you can set up your own content and deliver your own content. So this comes under discipline of mass communication media. So our students go towards digital humanities also. Is one area where they go at many media houses, as I told you. Then banks is one of the area. Then stock broking firms. Commerce students, they go to a chartered accountant's office or a company secretary's office to assist him. So internship opportunities are there. Okay. The basic aim is you need to gel practice and theory together. So this ranges generally from 3 months, 3+ months? Internships, is normally we give internships in the higher semesters. Okay. That is in semester 6, 7 and 8. Okay, so that student is more or less employment ready. That maturity is there, and if he performs good in the company where he's placed, industry where he gets absorbed there only. नाइस. इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रॉस्पेक्ट्स जो खुल जाते हैं बच्चों के लिए आफ्टर दे ग्रेजुएट फ्रॉम लिबरल स्टडीज़, तो वन इज़ एम्प्लॉयमेंट, वन इज़ हायर एजुकेशन, वन इज़ सेटिंग अप देयर ओन फर्म, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस ओनर्स या एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स. सो एक लिबरल स्टडीज़ से ग्रेजुएट हुआ बच्चा के आयाम किस तरीके से खुल सकते हैं, अगर आप उस बारे में कुछ बता सकें? लुक, एज आई टोल्ड यू कि किसी ने अगर
BA किया है अंडर मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, he can be a good journalist. ठीक है. Let us say he has done majors in mass communication and journalism and he has done minors in economics. Now this particular gentleman or lady can be a good business news analyst. Okay, he has the interpreting skill of economics area also and mass com also. Nice. So he can, you know, it's basically and the combos are infinite combos you can create. Correct. In terms of psychology and human resources, the best combo. If an HR manager knows the psychology, he is good at negotiation skills, he is good to in handling the employees, in mentoring them well. So no, the knowledge and the skill set developed in an individual are far more better than which are developed under a normal graduate program. This gives a combination of multiple skills. It is a real interdisciplinary, multidisciplinary course. We also have skill enhancement courses, ability enhancement courses. मैं ये पूछना चाह रही थी कि लिबरल स्टडीज़ 4 साल का कोर्स है विद मैंडेटरी इंटर्नशिप्स. अगर बच्चा एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाने की कोशिश करता है तो उसके सैलरी रेंज एज अ फ्रेशर क्या हो सकती है, एंड देन आगे चल के हाउ कैन ही प्रोसीड? Okay. Talking of the current market scenario, you know, the current market scenario, if you say a good graduate, he will get a salary package of at least 4 lakhs per annum to 6 lakhs rupees per annum. Then it depends upon individual skill set. It also, you know, salary packages are dependent on region specific. Return on investment is as such, it's good. Do we have a master's course under liberal studies as well? As of now, we are not offering. Look, first of all, you know, liberal studies is a mode of education. It's not a degree. Correct. Okay, so the degrees are basically the traditional BA, MA, MBA, MCom. Okay. Right. So for all the equivalent, we will have a master's. Master's degree, yeah. Okay. So as of now, we are offering PGDBM programs. If any student wants to go, that is in fintech, we offer marketing, finance, HR, IT is one area. Then masters in beauty. Say you have done economics as a major and minor as a psychology. Now, if you want to do masters of MA in psychology, you can do it because you have got the subjects of both the field. Correct. So masters you can do in any field. So that is one way. So in our university, as of now, liberal studies, we are not offering the masters, but yes, under humanities and social sciences, we have got MA programs. Commerce colleges, they offer MCom program. फाइनल पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को क्या एक टिप देना चाहेंगे अबाउट लिबरल स्टडीज़ एंड समथिंग अबाउट सिल्वर ओक यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज ऑफ लिबरल स्टडीज़? Silver Oak College of Liberal Studies, it's again I will say it is offering BA honors programs, Bachelor of Management Studies, BBA program in logistics and supply chain management, and BCom honors program in international accounting and finance, which is an ACCA accredited institute wherein the student can get an international ACCA certification from UK also. And the career options through liberal studies as a vehicle of pursuing graduation are infinite. You will have an immense ocean of knowledge to gather into your mind. You will have a 360 degree development in your personality. That's all I can say. And probably you may turn out to be good employers also rather than job seekers. I think those were the words of wisdom coming from Dr. Sameer Gopalan sir. It was nice hosting you, sir. Thank you so much for your time. And अगर आपको liberal studies से रिलेटेड जो भी डाउट्स है अगर वो क्लियर हुए हैं इस वीडियो से, तो इस वीडियो को प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए, कमेंट कर लीजिए. अगर आपके कोई क्वेश्चन अभी तक भी अनआंसर्ड रह गए हैं, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे एटलीस्ट कमेंट्स के थ्रू. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. हम अगले एपिसोड में आएंगे, एपिसोड 3 लेके ऑफ वार्तालाप, अ स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज ब्रॉट यू बाय सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी. तब तक के लिए प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड टेक केयर.